मेरी ज़िंदगी शुरू हुई हमारी शू शॉप में और वहाँ मैंने सीखा कि बिजनेस कैसे होती है। नो कंट्री इज बिल्ट विदाउट टू आइटम्स, FDI and SMEs. President Putin and the Crown Prince of Saudi, they are able to make a decision to cut the output. Mr. Modi was nothing in the early days. He executed. And now look, he's figuring it out how to take a nation. नमस्कार, मैं मेहराज दुबे और मेरे साथ हैं जाने माने बिजनेस सलाहकार डॉक्टर राम चरण, जिनके दो तरह के इंट्रोडक्शन हैं, दो तरह के परिचय हैं उनके। एक तो उनकी किताबें दुनिया के तमाम बिजनेस लीडर्स पढ़ते हैं और इसलिए भी वो जाने जाते हैं क्योंकि दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स उनसे सलाह लेते हैं। मेरी ज़िंदगी शुरू हुई हमारी शू शॉप में, जूते की दुकान में, और वहाँ मैंने सीखा 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में कि बिजनेस कैसे होती है। बहुत सुंदर सा आपने कहा कि दुनिया में चाहे कोई भी जुबान बोले, कोई भी भाषा बोले लोग, लेकिन सब बिजनेस की भाषा एक ही है, वो है मुनाफा। एक ही लैंग्वेज है। जैसे मेडिसिन में है, मेडिसिन केम फ्रॉम द वेस्ट। भाषा का ये बनाना, प्रॉफिट बनाना, वो उसका सारा फॉर्मूला, फ्रेमवर्क एग्जैक्टली द सेम। क्या हम मंदी में जाने वाले हैं, और अगर हम जाने वाले हैं तो हमें उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? क्या आपकी सलाह है? जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो सबसे ज़्यादा अब टर्किश में है। अच्छा, 55%। ओह, भी है ज़्यादा इन वेनेजुएला में है, अमेरिका में है थोड़ा से कम है, लेकिन अभी चलेगी 3 साल, 2 to 3 साल, 3 साल और चलेगी। सबसे ज़्यादा वेस्टर्न में, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन हिंदुस्तान में कम है। हमारी ग्रोथ ज़रूर होगी लेकिन कम होगी, क्योंकि इंटरलिंकिंग होती है, दी ट्रेड होती है। कहीं जब दुनिया में लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो मैं आपसे सलाह मांगना चाह रहा हूं उन लोगों के लिए जो कंपनी चला रहे हैं और अपने टैलेंट को जाने देना नहीं चाहते, और इसके अलावा वो लोग भी जिनकी नौकरियां जा रही हैं। Legacy companies who are well managed and say get the best talent, they will come. दूसरी चीज, the talent is going to go to start some ideas because they come from big companies. They were in the center of innovation. So okay, let's practice something. So Netflix ऐसे ही तो आया। Netflix वो गॉड, उनको कोई नहीं, अब सामान खत्म, तो ये लोग 20 मील हर रोज जाते थे, सोचते क्या करें, और नेटफ्लिक्स आया सोचने में। इन लोगों के पास पैसा तो है, ये तो नहीं वो गरीब है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग अगर कुछ भी नहीं है तो वो प्रोजेक्ट लें, and today every information is available, and start a new thing in their mind. Keep the mind and say, I'm going to do this project, search this, maybe this business I will do. This is the time to rejuvenate your brain and look for new opportunities, because the information is in abundance. और दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमी का ये जो 4 dictators हैं, उनका behavior decisions is going to affect. We now know that the President Putin and the Crown Prince of Saudi, they are able to make a decision to cut the output. ओके, सो पुतिन और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, वो दोनों मिलके तेल कम कर सकते हैं। कर दिया उन्होंने तेल की सप्लाई, जिसका असर दुनिया भर पे होगा। कर दिया, प्राइस ऑफ द ऑयल went up. जी बिल्कुल। They control it. तो वो दो लोग ही पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ाने के लिए काफी हैं। तब तो ईरान ने कहा मैं भी यही करूँगा, तब और लोगों ने कहा मैं भी यही करूँगा। तो वो उसका जो फ्रीडम है, प्राइस ऑयल, and price of oil has to do with the global economy. Now, if somebody like America has more oil and flooded, then it will tone down. That's not the case now. It has been before. Food will go through that. So then the people's psychology begins to affect. And that's the global game that's affecting the economies in the short run, 2 years, 3 years. No country is built without 2 items, FDI and SMEs. We have 4 companies that I know: TCS, Infosys, Wipro, HCL,
cognizant. Nobody competes with them. First, they know how to make money. They built businesses. So I go to YPO, I go to EOs, I see them. They understand how to do that. So they know how to build a business. Now they want to grow. So they know how to produce. They know how to develop product. They can become efficient. They need first is the low cost money. See, if your cost of money is 12%, it's very hard to make money. Second, they need how to sell, how to market, how do you find the sales force, how to train, how to take you overseas. Take those and then put the import restrictions. On the imports, we should never have them. Take appliances. Why do we import appliances? Consumer. 2023 में आपकी कौन सी 5 बड़ी सलाह हैं, क्या करना चाहिए और कैसे बिजनेस चलता है? We give up both words, strategy and execution. The origin of that began at Harvard Business School in 1960. So they had 2-semester course. First semester strategy, second course, they called it implementation. Because no faculty could teach both. That's how this came. And that's artificial life. So the key point for anybody who's in the startup mode, the part there is the most important. Do you have the right team? No mercy. If the wrong team or wrong person, they are small, they don't have resources, you can't go forward. Second thing is that you got to see, to move forward, what task needs to be done well. And if you fail, you take that as a learning event and go again and go again. Go for a different angle if you are. It's all through executing and learning and developing more concrete part of your strategy. Because in the startup, you have a high level strategy. You don't really know what will be useful until you execute something. So these people don't think that way, strategy and execution. And that's why they succeed. They change. Yeah, that didn't work. Go this way, that way, some other way. But then, maybe a word of advice for politicians in this country. हमारे जो नेता लोग हैं, उनको भी कोई मैनेजमेंट सलाह देना चाहिए. I have no advice. They should follow the principles and lessons Mr. Modi is using. Mr. Modi earned to be Prime Minister. No dynasty. Mr. Modi was nothing in the early days. He executed. In his final days to become Prime Minister, he was opposed in a major way. And now look, he's figuring it out how to take a nation. I believe he has a very wide following. Sir, 2047 जब हमारे स्वतंत्रता हमारे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, तब आप कैसा देखते हैं भारत को? How do you see, India in 2047 when we'll be 100 years old after, since independence? So सबसे पहली बात ये है कि India will be more confident. Why? Because India's greatest strength is people, very bright, hardworking, dedicated, and the best learning society in the world. That will continue. That gives you more confidence. Number 2, it will be more probably in the top 3 in the technology usage, technology development, technology generation to go forward. That's very critical because technology is at the center of an economic growth of a nation. It will happen. India will have alliances supporting them and vice versa, and will have a trade zone of its own. It has begun now. It has its own rupee-based trading bloc. The seeds are now driven here. It has its own rupee-based trading bloc. The seeds are now driven here. India will be highly respected and people will come here. डॉक्टर रामचरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपने विचार हमारे दर्शकों के लिए रखे. थैंक यू सो मच सर.